Congratulations! You got into your dream MBA college. What do you think? It was all about that preparation. Preparing for CAT, then preparing for the interview, and that's it. What do you think? Just let me know in comment, and then I'll tell you what's the real catch, baby. So before you join in your MBA college, you should give your 2 months completely into preparation so that when you enter the MBA college, the dream SIP, summer internship placement, and the dream final placement is a cakewalk for you. And here I'll tell you how can you do the same. So hello, this is Mrinali Meenal. Welcome you back to my YouTube channel where I talk about all things MBA, everything from in to out, and how you build your career after that by upskilling. So here we go. Firstly, we'll start with how the MBA college starts. So before you completely get into the video and understand how you'll do the 10 most practical things to do before your MBA start, I'll set you a small story how everything begins in MBA. So right when you enter the college, you'll first have your induction ceremony, few cultural programs, and everything in and out about MBA will be explained to you by your professors, your director, and your seniors. Most important. First and foremost, you'll build your resume. Right when you get into your MBA college, within first few weeks, you'll have to have your achievements structured wise in your resume so that the same can be used for your committee selection as well as for your summer internship. And I'll tell you the exact tips and tricks to make the perfect resume. For the same, your resume should be divided into 4 to 5 subtopics. First, including your school details, school and college details, then your achievement, then your academic, and then your internship, and then your soft skills and HUDs. For the same, I'll link the perfect resume template in the description box. Go and check and exactly how you'll make the same. Then comes the pro tip for building your resume, and that is quantifying your resume. अपने resume में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर डालो. तुम resume में जितना नंबर डालोगे, तुम्हारा resume उतना ही 8 year score cross करेगा, and your 8 year score of the resume will be 90 plus, and फट से selection हो जाएगा तुम्हारा. Your resume needs to have more and more numbers. For example, I scored 98% marks in business study. This one's for education. Then coming for internship. So I impacted 30% growth in the annual revenue by using these key metrics in my internship. And that's how you'll build your resume, a complete story wise. Coming to the second point, that is a brief and a smart introduction or an elevator pitch for you. Right when you enter your MBA college, छोटी-छोटी conversations होंगी. That can be with your professor, your director, or your seniors. Before getting into the college, you should also connect to your alumni, and then you'll have your formal introduction for club and committee selection. इन सब चीज में एक चीज जो common रहेगा, that will be you and your story. So you should have your story in a form of introduction ready so that when you interact with a person on one-on-one, you will ace the introduction process. तो खुद की एक story ready होनी चाहिए. That's second point. Coming to the third point, that is learn Excel and PowerPoint presentation. So you have to learn basic things in MS Excel and basic thing in PowerPoint presentation. तुम्हें लगेगा ये बहुत ही बेसिक है, क्या ही है, मैं तो आराम से Excel का मास्टर हूँ, मैं PowerPoint का मास्टर हूँ, तुरंत बन जाएगा प्रेजेंटेशन. नहीं, जितने डेडलाइंस होंगे ना तुम्हारे, it will become so difficult for you to complete all the presentation. You'll have 5 presentation to present in a day, and तब तुम्हारी बैंड बजेगी. And I don't want you to go through the same process. इसलिए प्रिपेयर कर लो. Have some different templates. Ask your senior for template. अभी ही टाइम है when you can interact with different alum, your seniors, and get templates. Understand कि basic presentation अगर मुझे बनाना हो, मैं क्या कर सकता हूँ? What all effects I can use in presentation to stand out? Learn VLOOKUP, conditional formatting, and basic all the formulas that you can have it on your fingertips. For PowerPoint presentation, learn how to use data and create story from the same. Actionable insight सबसे important है. लोग data present करेंगे क्लास में और तुम actionable insight present करना. And when I say actionable insight, I mean data का conclusion. If this data is showing A is a better human than B by 10%, तो explain कि उसके actionable insights क्या क्या होंगे. And that will help. And now, it's time for the fourth point.
That is, brush up your skills. Whatever majors you want to take in, just brush it up. It's marketing, it's finance, it's operation, whatever it is, have and do some basic courses in it. ये बहुत easily available है. Coursera, Udemy, because in MBA you come in from diverse backgrounds, right? So there can be a situation that you are not a marketing professional, you are a complete engineer and तुम्हें marketing terms ही नहीं पता है. And I don't want you to sit in a class where you sound dumb. That is the worst thing to do in your MBA class because everybody else is very smart. So the best thing you can do is basic skills है जो तुम सीख सकते हो so that you do not stand behind in your class. Now coming to the fifth point, that is build business awareness and basic business news awareness. अभी मैं बताती हूँ क्या करोगे तुम. Basic जो भी market में trending है, maybe the news about unicorn, maybe the news about startup, maybe the news about the latest IPO. You should know about it. I will not say that you should know A to Z about it, but at the same time, you should have an idea about it. Any JDPI, any case competition that will make you stand out, जिससे तुम prominently दिखोगे, उसमें you'll have to use data. You'll have to talk about the latest ट्रेंड ऑफ द मार्केट. और मार्केट का ट्रेंड तुम तभी बता सकते हो जब तुम्हें पता है, न्यूज पता है. अभी लेटेस्ट 2025 में अभी तक जो भी मार्केट में हुआ है, दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप. दैट विल मेक यू स्टैंड आउट. इसके लिए बेसिक रिसोर्सेज हैं, मिंट न्यूज, फाइनेंस डेली एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. अभी डिस्कस करते हैं 6th पॉइंट के बारे में, दैट इज रीड बुक्स. आई विल नॉट से कि तुमने अभी तक बुक पढ़ा होगा. आई विल नॉट आस्क दैट, बट even if you have not done, the basic thing that you can do right now, most basic thing is read books. Fictional, non-fictional, your call. I'll not interfere into that. तुम्हारे पास at least 3 से 4 books ऐसे होने चाहिए that you can talk about. ये जो तुम्हारी small conversation होगी ना in the starting days of your MBA, this will help you at that time. And the favorite thing that you can talk and an interviewer can ask from you is, what is the latest book that you are reading? Understand what the writer writes about, how he is different from other writers. Why do you want to read more of his book? एक short story पता होनी चाहिए. So for example, the time I was preparing and I got into MBA, that 1 year I was not very much into reading because I was preparing and developing my personality. So what I did, I read 3 books. मैंने तीनों बुक पढ़े. उसके बाद I read about the writers of author जो भी इस बुक के हैं उनके बारे में पढ़ा and I made my story. So every time any interviewer or my professor or my director जिसके साथ भी मेरी short conversation होती थी या किसी इंटरव्यू में पूछा जाता था, I would easily talk about those 3 books only. The Psychology of Money, The McKinsey Way, Manifestation related book. These are the 3 books that I read and all these were non-fictional. It is your call whatever you want to read, but read. And now we'll talk about the 7th point. And 7th point has to be time management. जितना ही normal sound करे, जितना ही basic sound करे, जितना ही लगे अरे मैं तो time manage कर लूंगा, मैं तो इन्हीं दिनों का preparation कर रहा था, बहुत easy होगा मेरे लिए. Club committee selection, placement preparation, summer internship and everything in and about MBA so hectic. Projects होंगे, deadline होंगी, presentation होगी and basic time management नहीं हो पाएगा. We can put in efforts to शाइन. इसमें क्या करेंगे, विल डू 2 थिंग्स. जो मैंने किया था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज हैविंग गूगल कैलेंडर. मैं अपनी गूगल कैलेंडर पे एंटायर टाइम, अपना हर टाइम को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर देती थी. 8 से 12 मेरी क्लासेस होंगे, उसके बाद आई कम, आई डू माई लॉन्ड्री, देन आई वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव टू डू. शाम में मैं स्नैक्स करने जाऊंगी, देन आई टेक अ नैप, देन आई वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट, अनदर डेडलाइन आई वांट टू वर्क ऑन. एवरीथिंग वाज टाइम. ये जितना ही बकवास साउंड कर रहा है, यू विल प्लेसमेंट कमिटी तुम्हें डेडलाइन देगी फॉर एवरी कंपनी दैट विल विजिट यू. सो जस्ट फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, गूगल कैलेंडर ब्लॉक करना सीख जाओ. खुद के साथ मीटिंग शेड्यूल करना सीख जाओ सो दैट यू हैव एन आइडिया. आई एम नॉट सेइंग यू एंड आस्किंग यू टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, बट वो फॉलो करोगे तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि अच्छा आज के मेरे लिस्ट में ये था. मैं टू डू लिस्ट बनाती थी, वीकली टू डू लिस्ट, मंथली टू डू लिस्ट एंड पर डे टू डू लिस्ट. ये जितना ही तुम्हें फनी साउंड कर रहा होगा, आई नो, मुझे बताते वक्त खुद भी अभी ऐसा ही लग रहा है, बट यस, मेरा एमबीए कॉलेज लाइफ में दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आई वाज देयर इन कमिटी, आई वाज देयर इन क्लब, आई वाज देयर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, आई वाज देयर होस्टिंग इवेंट, आई वाज आल्सो डूइंग फुल टाइम इंटर्नशिप दैट आई टॉक डिफरेंटली एंड इन सब के साथ आई हैड माय पर्सनल लाइफ आल्सो. कंसीडरिंग द सेम, मेरे सारे टाइम ब्लॉक्ड थे. मेक अ टू डू लिस्ट, वरना आई डू नॉट वांट you to miss out on fun as well as work as well as everything professional and personal. So
To-do list and time management is the key. Now coming to the 8th point. अभी मैं बताती हूँ 8th point is very personal and very important for your impression. Getting up for professional setup. इसमें हम कवर करेंगे 3 चीज, that is LinkedIn, formal wardrobe and email etiquette. ये सभी बहुत ही important and basic thing है that you should brush it up. When talking about LinkedIn पे तुम क्या क्या करोगे? You'll have your professional summary ready for whatever you have done till date. Minimum 500 connections अभी से बना लो. Send connection request, connect with them, but 500 connection तो होने ही चाहिए, बेसिक है. उसके बाद एक प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए. कोई भी ऐसे शादी में गए पिक्चर लगा लिए, ना कंप्लीट क्रॉस, दैट विल नॉट वर्क. गो एंड गेट योरसेल्फ क्लिक्ड प्रोफेशनली. एक प्रोफेशनल इन योर फॉर्मल सूट शुड बी योर लिंक्डइन डीप. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा लिंक्डइन शुड बी वेरी प्रोफेशनल. योर समरी. नाउ कमिंग टू प्रोफेशनल वार्डरोब. पार्टीज वगैरह इज डिफरेंट. उसमें यू कैन ड्रेस अप द वे you want to. You should have a polo t-shirt with you, whether you are a girl or a boy, and 2 pair of professional suit is a must. Then coming to email part. तुम दिन भर में कम से कम 10 email तो करोगे ही, whether it's for internship, whether it's to your senior, whether it's to your alum, maybe it can be related to leave, can be related to deadline that you want to extend, or any request that you have to make. इन सब में जब तुम email करोगे, it should look professional. नीचे add your signature. This is Mrinalini Meenal, section B, MBA roll number this and this, with your image. That will look very, very professional. And now coming to the 10th point, and that is financial planning. बहुत ही बकवास लग रहा होगा कि financial planning क्या होता है. अभी मैं financial planning क्या करूंगा? अभी तो मैं student हूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं. तुम जैसे ही MBA में जाओगे, तुम्हारे खर्च multiply हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे. You do not want to compromise on parties. You do not want to compromise on good clothes and everything. And I would suggest all my juniors who are just about to start their college, do not be completely dependent on your parents. This is just example that I will give. So I was dependent on my parents for first 2 months in my MBA, and rest entire time I was working. This may not sound normal, but yes, I was doing internship. The time you get money, you get financial freedom. अगर तुम्हें कोई छोटा सी ट्रिप करना है, you want to do something, you want to enjoy that party, you want to get into that club, anything that you want to go, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए. It's not that your parents will not give. You can also cover it from your loan, but I would then also suggest you to earn it. जब खुद अर्न करोगे तो खुद पता चलेगा and you will spend wisely. So financial planning बहुत important है. You can do the same thing that I did. I was interning. छोटे मोटे internship सब जगह मिल जाते हैं. Maybe they will pay you 5,000, 10,000. For me in first year I was earning 10,000, 15,000 per month. Right after all my classes I used to work on this along with my club and committees. In second year I was earning around 30 to 40,000 per month. So my expenses were completely covered apart from fees. Fees का I have not covered from the internship. Financial planning important है ताकि तुम्हें पता रहे तुम्हें कहाँ कितना खर्च करना है, पर डे एक्सपेंस कितनी है. मेक अ एक्सेल शीट, राइट इट डाउन. आई एम नॉट सेइंग कि तुम मत करो, तुम सब करो, एंजॉय करो, बट हैव अ फेयर स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीटली. पता होना चाहिए कब कहाँ क्या यूज कर रहा हूँ. बी माइंडफुल. दैट्स द एंटायर थिंग आई वांट टू से. अभी ये हो गए हमारे 10 पॉइंट. इन सारे पॉइंट का एक मास्टर पॉइंट है दैट आई रियली वांट टू शेयर इट विथ ऑल माय जूनियर्स. देखो, MBA कॉलेज जितना हैपनिंग साउंड करता है उससे ज्यादा डिफिकल्टीज होते हैं. वहाँ बहुत तरह के पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत कुछ होता है. बहुत प्यारा फैमिली भी मिलेगा तुमको. फैमिली से आई मीन योर फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव लोग भी मिलेंगे. मुझे भी मिले थे, तुम्हें भी मिलेंगे, सबको मिले थे. दिस इज नो डिफरेंट. योर केस विल बी नो डिफरेंट, बट इन दैट केस यू जस्ट हैव टू काम डाउन. बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे, बट सिंस यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे काम चल जाएगा. बट पॉलिटिक्स एंड नेगेटिव थिंग दैट विल हैपन. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ काम माइंड. मैं कितना भी स्ट्रेस कर लूं उस पे कम है. डू अ मेडिटेशन. 5 दिन करके देखो. इट विल हेल्प यू डेफिनेटली. 5 to 10 minutes meditation. It will calm your mind. अभी से प्रैक्टिस करोगे then you can do it in MBA also. And I'm just seeing it because मैंने किया है और मैंने वो फेज भी enjoy किया है. वो फेज भी था जब मैं नहीं करती थी ये सब, and I was in real mental pressure. बहुत सारे कुछ होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होंगी, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होंगी. इन सब में योर माइंड पेस शुड बी सेम. इसके लिए मेडिटेशन करो. Really do meditation. This will help. Another thing you can do is talk to your friends. MBA में जा रहे हो, तुम्हारे MBA में फैमिली बनेगी, MBA में फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे. But at the same time, you should have one backup, one support system outside of college too.
whether it's your mother, your sister, or any of your friend, your boyfriend, your girlfriend, whoever it is, but there should be one person, even in adverse situation when you're feeling low at night, you can give a call to that person. ऐसे person जरूर होने चाहिए. Talk to them, जितना बात करोगे इतना helpful होगा. That's all. And yes, to all my juniors, and yes, that was the 10 things that you need to do before you join your MBA college. I think I have explained my heart out, everything that went with me, everything that I've heard with my fellow colleagues. जो उन्होंने mention किया, जो मैंने experience किया, वो मैंने सब explain किया है. Anything from now onwards you think that you want to ask me in detail, you can comment down. Comment कर दोगे, मैं video बना दूंगी. Anything that you want me to cover, अगर कुछ छोटा है comment करो, I'll explain it there. If there is something that I really think it should be a long form video and I should explain it in detail, वो भी कर दूंगी. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. That's all. All the best. Ace your MBA and get the highest placement.